Good morning, students. In today's class, we'll discuss about greenhouse effect. Did you understand that what is greenhouse first? Okay. तो पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है. So generally, it has been observed that in cold countries, people usually make the home by using glass, and they used to grow the plants in this glass houses. Okay, it has been observed. Then people used to grow the plants within the glass houses. Now here, these plants they require sunlight for photosynthesis. That is the process by which the green plants prepare their food. Now, the sunlight, the light which is radiated by the sun, enter within the glass, enter through the glass walls. Now, after the reflection, the lights become quite. What you can say that? There is a word, but it is quite difficult to explain in class 8. That's why. But I am telling you that word. But you are just trying to remember. We'll discuss about it in higher classes. So here, the wavelength, short. When the light is emitted from the sun, this light has the shorter wavelength. But after the reflection of the light by the green plants, the wavelength of the light increases and it is become larger wavelength. But it is not important for this class to understand what the wavelength is. Okay, we'll discuss about it in higher classes. तो आपको याद रखना है कि जो सनलाइट जो आती है तो वो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है. सो इट इज अ शॉर्टर वेवलेंथ, अ लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ. नाउ आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द ग्रीन प्लांट्स, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट increases. As a result, it will become a light having larger wavelength. Now the light having larger wavelength, it will not be able to pass or cross the wall of the glass. Okay, so the glass house remain warmer as compared to the outside. Okay, so the temperature, as a result, what will happen? The sunlight get trapped within the glass house. ठीक है, तो ये जो सनलाइट है वो अटक जाते हैं कहाँ पे? ग्लास हाउस के अंदर. What will happen then? The temperature inside the classroom, okay, inside the glass house becomes more as compared to the temperature outside. As a result, the people will feel more comfortable within that room. तो हम लोग जनरली देखते हैं कि जो कंट्री में ठंडी ज़्यादा होती है उस जगह पे लोग कांच का ऐसे घर बनाते हैं और उसमें प्लांट्स को बड़े होने देते हैं. तो क्या होता है, ये प्लांट्स जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं. ये रिफ्लेक्टेड सनलाइट इस कांच के रूम के अंदर अटक जाते हैं और रूम का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है. रूम का अंदर का जो माहौल है वो गर्म हो जाता है और बाहर टेम्परेचर कम रहता है, ठंडी रहती है. That's why the people feel more comfortable within the classroom. Okay, these types of houses are called greenhouse. तो ग्रीन हाउस क्या है समझ में आ गया. चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट. Now it has been observed in the atmosphere of the earth that there are so many gases present within the atmosphere, like carbon dioxide, CH4, its name is methane, okay, N2O, nitrous oxide, okay, CFC, chlorofluorocarbon, water vapor. These types of gases, they form a layer in the atmosphere. This layer perform an activity. What? That
the radiation of the sunlight, this layer allow the light, radiated light by the sun to enter within the earth. But after reflection, the wavelength of the light becomes larger. As a result, these gases, they can trap some amount of the radiated heat. तो ये जो सनलाइट है उसमें हीट रहता है, एनर्जी रहता है. इस एनर्जी का कुछ एनर्जी ये लोग क्या करते हैं, पकड़ के रख देते हैं ना, स्टोर करके रख देते हैं, they trap करके रखते हैं. They trap some amount of heat. They trap some amount of heat that radiated by the sun, by the earth. Okay, that reflected by the earth. The radiation comes from the sun and it reflected by the earth. They can trap the heat of the light which is radiated by the sun. Clear? Now, what will happen? The radiated heat which is trapped by these gases, this heat can be used by these gases further to warm the inside of this layer. Okay, this radiated heat is used to increase the temperature of the earth. Okay, this radiated heat is used by the gases to increase the temperature of the earth again. This phenomenon is called greenhouse effect. This phenomenon is called greenhouse effect. Okay, this radiated, we can say the radiated, the reflected heat by earth, which is trapped by these gases. It's not needed to write this one. You can write it from your book. It is very important. That is, what is greenhouse effect? So let you understand again that the sunlight, it radiates heat which enter through the atmosphere or within the atmosphere, and it enter to the it directly fall on the soil. Okay, now after this, the soil reflects some amount of this light or this heat. Now the reflected radiation, some amount of the reflected radiation gets trapped by these gases which are present in the atmosphere. This trapped heat is used by the gases further to increase the temperature of the earth. This phenomenon is called greenhouse effect. तो फिर से बोलते हैं कि सनलाइट से जो रेडिएशन आते हैं वो क्या है, वो पहले मिट्टी में आके गिरता है. अब ये मिट्टी क्या होता है, पहले गर्म होता है और वो कुछ अमाउंट के हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसे भेज देता है. अब ये जो रिफ्लेक्टेड हीट है उसका कुछ अमाउंट ये सब गैस क्या करते हैं, ट्रैप करके रख देते हैं, पकड़ के रख देते हैं. ये जो हीट ट्रैप हुआ है, यही हीट बाद में क्या होगा, ये लोग छोड़ देंगे, बाद में ये हीट को लिफ्ट करेंगे, लूज करेंगे. ये हीट में क्या होगा, ये अंदर का जो पोर्शन है ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा. ओके, तो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, ये जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज दिस फेनोमेनन इज जस्ट सिमिलर टू दैट फेनोमेनन व्हिच हैपेंस इन द ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस के अंदर जो फेनोमेनन हम लोग देखे ये उसके साथ सिमिलर है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. एंड दिस गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस. ओके, तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे हो सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस. तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. तो याद रखें दिस गैसेस आर ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, याद कर लें ये जो गैस है
इनको हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे. Why they are called greenhouse gases? Because they can trap the heat which is radiated by the earth and they can use the heat to increase the temperature of the world. That's why they are called greenhouse gases, and this effect is called greenhouse effect. Clear? ठीक है, clear हो गया? This one is the greenhouse effect. So there are two questions. Number one, what do you mean by greenhouse gas? And number two, what do you mean by greenhouse effect? तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by greenhouse gas? Give some examples. ठीक है, उसके साथ एग्जाम्पल दे देंगे. And number two, what do you mean by greenhouse effect? You can take the help of your book to write the answer of these two questions. Okay, next, let me proceed for the next one. The next one is cause of increase in the concentration को आप लोग अभी अमाउंट समझे. concentration of greenhouse gases. Okay. Number one. So the question is that the cause of increase in concentration. Maybe you will face this question. That is, write some reason for the increase in concentration of the greenhouse gases. तो ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज होने का रीजन क्या है? तो इसके लिए आपको पहले ग्रीन हाउस गैस का नाम याद रखना है. NCO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, CFC, डिजल. ओके, अब देखो आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. All of these gases can be produced by the burning of fuels. तो excess burning of fuels. If we burn the fuel in excess amount, then it will produce the greenhouse gases. So this one is the excess burning of fuel is the reason for the increasing concentration of greenhouse gases. Okay. The fuel means fuels like you can indicate like coal, petroleum, oil. These types of fuels which are used to burn by us for preparing food or any other things, for any other work, for preparing electricity and so on. So while burning these types of fuel, it produces huge amount of greenhouse gases. Okay. Number two, coal, which is burned in thermal power plant. Increase concentration of greenhouse gases. जो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल को बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, दिस कॉजेज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. में भी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होते हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर थ्री. excess use of refrigerator, AC produce more CFC. Okay, if we use excess amount of excess number of refrigerator, AC, then it will produce the CFC, that is chlorofluorocarbon, which is also a greenhouse gas. तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं. ये सब अलग अलग करके भी आप इसका प्रोडक्शन बोल सकते हैं. नंबर 4, deforestation means the cutting down of trees. Okay, means cutting down of trees causes increase in concentration of greenhouse gases. As we know that trees used to absorb carbon dioxide gas
for preparing the food, that is by photosynthesis. But if we cut down the trees, what will happen? The excess amount of carbon dioxide which we are usually produced by burning of fuels, they will not be replaced from the they will not be replaced by the oxygen which is produced from the green plants by so as a result what will happen, the amount of carbon dioxide will be increased within the atmosphere. अगर हम लोग पेड़ काट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो प्लांट्स कम कर देते थे वो काम नहीं हो पाएगा। ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये ठीक से नहीं हो पाएगा, साइकिल टूटेगा तो ऑब्वियसली खराब होगा। ओके, इट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, these are the reasons by which the concentration of carbon dioxide can be increased or the greenhouse gases can be increased. Next, consequence of greenhouse effect। consequences of greenhouse effect। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का खराब दिक कौन सा है, सबसे खराब दिक कौन सा है? दैट्स द consequences, that is global warming। global warming, very important। what is global warming? As we know that greenhouse gases, they can trap the heat, trap the radiated heat by the earth, and they can increase the temperature of the earth gradually. This heat can be used to increase the temperature of earth. This phenomenon is the greenhouse effect. As a result of greenhouse effect, what will happen? The temperature of the earth increases, or the temperature increases globally। वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसी फेनोमेनन का हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ग्रीन हाउस effect, the average temperature of the earth is increasing rapidly, बहुत जल्दी, rapidly, day by day। दिन दिन अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। दिस फेनोमेनन, ये घटना को इस कॉल्ड बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। So due to greenhouse effect, the average temperature of the earth is increasing rapidly day by day। तो दिन दिन अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। Here it is written the earth, okay, here it is temperature of the earth, यहाँ पे the लिखा हुआ है TH। The earth is increasing rapidly day by day, by day by day। This phenomenon is called global warming। Now I am giving you just one homework, that is what are the effect of global warming? What are the effect of global warming? That is consequences of global warming। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या क्या हो सकता है? यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट बाय योरसेल्फ, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है। जस्ट यू कैन राइट 2 to 3 points, 2 to 3 points, यू हैव टू राइट इट बाय योरसेल्फ। आप लोग खुद से इसको बनाने का कोशिश करें, नहीं होगा तो हम कर लेंगे। ओके, द वर्क इज कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा या फिर हो रहा है, जो दिन दिन जो हो रहा है, तो इसका क्या बैड इफेक्ट हम लोग के ऊपर आ रहा है। ओके, इसका क्या खराब असर हम लोग के ऊपर पड़ रहा है। यू हैव टू राइट अबाउट इट। ठीक है, तो लर्न अप टू दिस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स और रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।